कहाँ तक हम पहुंचे थे लास्ट टाइम? टेल मी फास्ट। Yes, ma'am. We are doing calculation of bond. नहीं नहीं, पीडीएफ में। PDF मैम में एडीआर जीआर पे। पेज नंबर? अच्छा, दिस वन? नो, आई डोंट नो। इससे इससे पहले ही था। पेज नंबर, पेज नंबर। मैम 26 26। 26। ओके, ये तो शायद कवर किया था ना लास्ट टाइम, एडीआर जीडीआर आईडीआर को। यस यस मैम, मैम ये यहाँ तक कंप्लीट कर किया लिया था, था, यहाँ तक हाँ कर जी, लिया हाँ था। जी। आगे से करना है। ओके ओके, हमें यहाँ से चलना है क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उससे पहले वो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस समझ लेते हैं। ओके, so it all started from the technology boom. Okay, when there was technology boom in 1999 or 2000 around, so there was lot of money into the market because stocks were going up, people had made really good profits. So क्या हुआ, इतना ज्यादा पैसा आ गया था लोगों के पास। So लोगों ने बोला कि okay, let's fulfill all their luxuries, all their needs as well as wants. Okay, then what to do with the additional money? So then there was a trend in the US economy to buy more of real estate, especially houses. ओके, सबसे पहले क्या किया लोगों ने, बोला अब हमारे पास सब कुछ है बट अभी रहने को छत नहीं है, सो लेट्स बाय हाउसेस सो दैट ये भी एक हमारा बकेट में से टिक मार्क हो जाएगा, राइट? सो लोगों ने घर लेना शुरू कर दिए। नाउ you understand the relationship between demand and supply, right? When the demand is more and the supply is limited, the price of the house or price of any commodity will go up. And if it's ulta, opposite of it, if the supply is more and demand is less, for example, it happens with the agricultural commodities, especially during the particular season when there is a huge bumper production of onions. So you see onions आपको 2 rupees or 5 rupees per kg पे भी मिलेंगे, and when there's a scarcity, when there is a flood, at that time you will get onion at 60 or 100 rupees per kg, right? So it's nothing but the demand and supply relationship. So the houses or the real estate items were limited in number, but the demand was very high because everybody rushed to buy new houses, especially the retail or the people like you and me. So the price of the house went up. Now the investment bankers, the insurance companies, each and every financial intermediary thought to take advantage of this ongoing trend. So what they did, the first financial intermediary who wanted to take the benefit was the I would say subsidiaries of the banks, because banks were the one who were giving out loans to the people, right? So they knew कि कितना ज्यादा amount में उनका लोन जा रहा है, and जो उनके subsidiaries है, for example, we have Axis Bank, we have Axis Securities, right? Now they have other financial planning, some subsidiary kind of thing, or some element of them is into the derivatives or playing with the different strategies of derivatives. So what they thought, let's make up one more security by bundling up these loans. So what will happen, my one security will contain, for example, 5 loans, okay, जो बैंक के पास हैं. So it was like a commission system for them. They also had a commission in between कि बैंक वालों को क्या करना है, बैंक को अपने loans दे देने हैं एक दूसरे इन्वेस्टमेंट एंटिटी को. That investment entity, what they will do, they will bundle up these loans and will make a new security जिसके ऊपर rate of interest उन्होंने high दे दिया. So the people are having access of money into the market because of the boom. So what happened was कि people thought, okay, now there is a security into the market. Consider that security is a bond for your easy understanding. There are two bonds in the market. One is giving 6% rate of interest and one is giving, let's say, 12% rate of interest. Okay, so the bond or the security which is giving 12% rate of interest will obviously have more risk. Why?
because high risk, high return, low risk, low return. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे क्यों लो रिटर्न होते हैं? बिकॉज देर इज नो रिस्क एट ऑल विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. The moment the risk increases, your return also increases, right? So here the first entity was these investment bankers or the investment companies which bundle up the loans and converted into a security which was sold to the other investors, right? So how was it linked to the insurance companies? So second entity came into the picture was insurance companies. अब insurance companies ने बोला जो बैंक के लोन से वो डिफॉल्ट हो नहीं रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं दूसरे जो सिक्योरिटी पे पैसा लगा रहे हैं वो भी डिफॉल्ट हो नहीं रहे हैं. So why not I also should make money from the system? So insurance companies started insuring these high risky securities which were there by the financial intermediaries. उन्होंने उस पर इंश्योरेंस देना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल AIG which was the main entity in this 2008 financial crisis. Okay, so अब उन्होंने इंश्योरेंस देना भी स्टार्ट कर दिया. ऐसे करके मर्चेंट बैंकर्स, other very very small entities, everybody participated. I just told you the major players, but everybody participated one way or the other to make money from the market, right? Then there was a time when understand the thing. बैंक्स लोन किसको देते हैं? जिनका क्रेडिट वर्दीनेस चेक होता है, राइट? कि whether you are eligible to repay the loan or not. ओके, बट इतना सारा डिमांड था और इतना सारा लोग रियल एस्टेट को जो भी बिल्डर्स थे वो भी इतना प्रोड्यूस कर रहे थे कि जो लो क्रेडिट वर्दीनेस पीपल थे दे वर आल्सो गिवन लोन्स बाय द बैंक्स. अब उनको पता था कि अगर हम नहीं रीपे कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बैंक हमसे हमारा घर ले लेगा, यही होगा ना. तो हम रीपे नहीं करते. सो जो I would say ineligible people who took the loans, they started defaulting at a point. So from the 2007 onwards, they started defaulting. Slowly, when others also saw, okay, if I also not pay, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा घर चला जाएगा मेरा. मुझे घर नहीं चाहिए, तुम ले लो, but I will not pay a penny. In this way, it started a chain of defaulting the loans which are given out by the banks. So initially, the loans which are given out by the banks started defaulting. उनको क्लब करके जो सिक्योरिटीज बनी थी, दो सिक्योरिटीज ऑल्सो स्टार्टेड डिफॉल्टिंग. उनके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस दिया था, those were also defaulted, and in this way each and every financial intermediary which was related started defaulting, and there was a huge collapse in the US economy. And this collapse is nothing but 2008 financial crisis. And it was not just limited to the US, but see, जब आपको इतना high rate of interest US में मिल रहा है, so everybody across the globe, the person sitting in the Europe, person sitting in the India, person sitting in any other part of the world also want to take advantage of the high returns which are available from the US, right? So even financial institutions from other countries has also put in their money into the US economy. And when US economy got collapsed, each and every country's economy was pathetically damaged. सब पे बहुत ही बुरा असर आया था. Okay, am I making sense? Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, So ma'am, is it a good to invest in bonds or I didn't get your question. actually, I mean to say is it good to invest in bonds? It purely depends upon what is your agenda. Whether you want to make money, whether you want to safeguard your money, whether you want to double your money, you want also on your risk taking capacity. Are you a risk taker or not? So the people who put in their money in the equity market are said to be the risk takers, right? But the people who invest in bonds,
That too in the government. See, bonds are also, you studied, no, bonds and debentures. जो private companies के होते हैं, those are debentures. Also, I forget one thing. In the 2008 crisis, there was an important role of credit rating agencies also. So the newly bonded, the loan club करके जो newly security generate की थी, अब उनकी क्या होती थी, उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग्स देती है, ट्रिपल ए, डबल ए, बी, सी, बी प्लस, सी नेगेटिव, डी दैट इज अ जंक, राइट। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि पैसा बन रहा है, तो उन्होंने हर एक सिक्योरिटी जो भी मार्केट में आ रही थी उन सबको ट्रिपल ए, इट मीन्स हाईली इन्वेस्टेबल ग्रेड का टैग दे दिया। The moment you see highly investable grade, obviously you will also put in your money कि okay, credit rating agency तो झूठ बोलेगी नहीं। Now they are insured also, the insurance companies ने भी देखा होगा, when two major players have seen that security, why should not I put in my money, right? So people started putting. अब इसमें क्या हुआ, जो आप बात कर रहे हो, if you are a risk taker, then you can even put in your money in the security which is B grade or C grade, right? Because lower the rating, higher would be the risk in on those securities and higher would be the returns, right? So it is not like bonds are good or bad. You have various parameters to check and then only you can decide. Yeah. तो लाइक ये बॉन्ड्स वगैरह को कैसे मतलब समझेंगे, लाइक कैसे इन्वेस्ट करेंगे समझ के, से ये बताओ। तो सबसे पहले आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देख लीजिए, राइट। उसके बाद आप देखिए कि with that particular range of risk, which is the bond into the market giving the highest returns, then you see कि उसको किसने I mean which credit rating agency has giving the rating. अब when you study the bonds terms and terminologies, sorry, bonds terms and conditions, उसमें काफी सारे parameters भी दिए होंगे, whether it is completely I mean convertible or partially convertible, what is the maturity, what is the duration, what is the time period for which you want to block in your money, right? सो मैम इसकी कोई ड्यूरेशन होती है क्या, लाइक फिक्स डिपॉजिट की तरह, लाइक मुझे Yeah, 5 yeah. ईयर के लिए होल्ड करनी पड़ेगी या सपोज We saw समथिंग in लाइक। the last session, no, there was a maturity of 5 years जिसमें हमने example लिया था. Were ओके, you मे बी there मिस in the कर, last session? या आई वाज, बट मे बी आई मिस्ड दैट पार्ट। How can you miss that part? It was really important. आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, ओके। Yeah, yeah. But Ma'am, still, I would request you all to join the live sessions because, see, frankly speaking, you guys have paid for the live sessions, right? You have यस ऑफ not कोर्स मैम, paid for the recordings. So यस मैम। whatever doubt you have, you can directly ask me. Why to wait कि हाँ next weekend तक मेरा doubt clear होगा, है ना? So try to attend my live session and try to clear every doubt by the end of the session. एक भी doubt घर लेके, I mean after the session ends, you should not be having even a single doubt in your head. जो भी आप यहीं पे clear कर दीजिए मुझसे. Okay? Yes. Someone was saying something. as you were stating the various characteristics during the 2008 financial crisis, Mm-hmm. do you think we are kind of in a state of doing that, like kind of history repeating itself? Because as you can see, there's a massive inflow of the money in the stock market and cryptocurrency. So do you think we are again going through that stage in the formation of a bubble kind of thing? Not exactly, because that was purely a financial crisis, right? And this is not a financial crisis. This is a natural thing, No, and ma'am. this is a No, pandemic. no, no, I'm not talking about the 2020 breakdown of the it kind of Mm-hmm. the Nifty. I'm talking about the formation. Are we in the stage of the early, like pre 2008 level? Mm-hmm. That Because of the free flow of the money, you are saying. yes, on that, and major inflation in the as we have seen the stock market going Mm-hmm. really 1600 Yeah. 200 points, 16,200 points and above, and the economy is still not doing well. It's double in a year. Yeah. Yeah, that too. So, and do you think we are going through that stage, like pre 2008 level, like the formation of a bubble?
हो सकता है. I don't deny this fact because the kind of money which is coming through FIIs, no, it has increased over last 1 year. So from that sense, yes, I can say that. And I mean, it's visible also, no? See, each and every stock, the prices at which they are currently being traded, they are they are extremely expensive. इतना तो कंपनी वालों को खुद को नहीं लगा होगा कि हमारे स्टॉक प्राइसेस इतने ऊपर जा सकते हैं, राइट? इन सभी कंपनीज के पीई देखो कितने हाई है. That see the kind of IPOs which are coming into the market, and all the IPOs are successfully getting listed, है ना? So Ma'am, yeah, because of the money that is being that is in the market. yeah. Yeah, so they actually want to have a clean run. Yeah, why not get listed in this boom? They also want to get listed. So yeah, you can say that. Yeah. Okay, thank you, ma'am. Okay. ठीक है. Any doubt from this crisis wala thing? Okay. No, ma'am. No, ma'am, it's clear. So yeah, okay. What was the next task? Tell me. Ma'am, Sanket here. Yeah, tell me. I want to ask one thing like these, you said pool of loans kind of things, do they still traded currently? Do they still exist? Those securities? Yeah. I don't think so, but you need to check. I mean, I don't track US economy, so I don't Okay. have idea, frankly speaking. Mhm. Yeah. Okay. Batao, what was the next task? Companies in Nifty 50 and Sensex. Okay, hope everybody had done that study. That was for your own benefit. Yes? Okay, next one. Yeah. Next one. ADR ratio, ADR, IDR, GDR. Tell me, did you find that Excel of the latest companies being listed and their ratios? No? I just have the names. No, I asked you to come up with the ratios of those companies, no? आधों ने तो सर्च ही नहीं किया होगा. Tell me. Excuse me, नहीं मैम, इसके बाद तो आप बॉन्ड Yes. स्टार्ट कर दिए. मैम आपने मतलब फर्स्ट डे कहा था कि आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दो, तो Yes. फिर अभी मैंने एक क्वेश्चन है. Yes, tell me. सो मैम आई एम रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ डाबर, तो फिर उसमें लाइक वो थोड़े से पहले लाइक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं उससे पहले उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है कंपनी के बारे में. तो उन्होंने जैसे ह्यूमन कैपिटल में उन्होंने कैसे कैसे इन्वेस्ट किया, तो फिर उन्होंने मतलब 10-15 पेज लिखे हैं उसके बारे में. तो इज इट कंपल्सरी कि वो सारा बहुत इन डेप्थ पढ़ना है और उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रिमेंबर? नहीं. See, you did not to mug up anything, right? You did not to even read all these things line by line and remember. The only thing I want from you is कि okay, at the end of this module, if I ask you anything, whether this thing is available in the annual report or not, or if it is available, then in under which segment, where to look for, at least you should be eligible to know कि ये है कि नहीं है. अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए. बिकॉज अभी आप एक कंपनी डाबर की पढ़ रहे हो, कल को उठा के मैं आपको कोई और कंपनी पे रिसर्च के लिए दे दूंगी, तो कंपनी तो चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, द इंफॉर्मेशन वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट द पैटर्न ऑफ रिपोर्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियाज पर्सपेक्टिव इट वुड बी सेम, राइट? एंड अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू गो थ्रू इट.
So आप उसको easily जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा. Need not to read one line by line or remember anything. तो मैम ये कंपनीज वगैरह इतना इन डिटेल क्यों देती है? उन्हें भी तो मतलब पता होगा ना कि इन्वेस्टर्स वगैरह इतना पढ़ते नहीं है. नहीं, Warren Buffett reads only annual report, and that too religiously with one by word in detail. आप नहीं पढ़ रहे हो, that doesn't mean ना कि दुनिया नहीं पढ़ रही है. Okay. Yeah. मैम Yes. मैम एनुअल रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो जैसे जो एमडी है या सीईओ है या चेयरपर्सन है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, उनके जो हिस्ट्री वगैरह या उनके क्वालिफिकेशन Your बारे में voice लिखा हुआ है, is तो not clear, Rahul. जस्ट a second, मैम. हेलो. Yes. या जैसे एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर, सीईओ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन के बारे में उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह दी हुई रहती है. उन्हें उसे पढ़ना हमारे लिए तो जरूरी नहीं है. अभी के पर्सपेक्टिव बाद में जब मैं फ्यूचर में जब मैं हाँ, अभी तो नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में एनालिसिस करना जरूरी है मैम. सी डिपेंड्स ना कि आप फिर किस डिटेलिंग तक जाते हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, आप एनालिसिस किस पर्पस से कर रहे हो, आपका एजेंडा क्या है. सी अगेन फाइनेंस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट. आपको करना क्या है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एजेंडा कि व्हाट डू यू वांट टू फुलफिल बाय रीडिंग दिस. सो कभी कभी देखना भी पड़ता है, कभी कभी जरूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको मैनेजमेंट डिस्कशन, इनकी एजुकेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इन सब की जरूरत नहीं है. अब कभी आपको अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है. ओके. ओके मैम. या ठीक है. होप सब लोग पढ़ रहे हो साथ साथ में एनुअल रिपोर्ट, या ये भी लास्ट डे उठाओगे एक रात पहले बोलोगे हाँ हमने पढ़ ली. डोंट डू दिस. ओके. आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू विल एंटर इनटू योर इंटर्नशिप पीरियड, नो, एट दैट टाइम अगर आपने अभी एनुअल रिपोर्ट अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, आप ही लोग मुझे कॉल करके बोलोगे हाउ टू मेक रिपोर्ट, हाउ टू डू द एनालिसिस. और ये हर एक बैच का होता है. अभी आप बोलोगे हाँ हमें EIC जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं बनती है जब आपको दिए जाती है. तो जो मिस्टेक्स ऑलरेडी बैच करते हैं मैं आपको वही बोलूँ, डोंट डू दिस. अगर आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना, देन आई कैन रियली मेक इट आउट कि हाँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, आपने एक रात पहले पढ़ ली. फ्रॉम द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क टू मी, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट आई एम नॉट, है ना. एंड आप सिर्फ पहला बैच नहीं हो मेरे लिए. Okay. So now moving to the foreign currency convertible bonds. ठीक है. So इसमें क्या होता है, you borrow, okay, for example you have the bonds which are issued by the, let's say, government of India or any other company in the India that will be issued in the INR, right? But if it's issued by a company in any country other than India, then it would be in USD or pound or the, the currency of that particular company where it is registered. So if it is denominated in any foreign currency and issued in the foreign market and you are the investor, so for you it is the foreign currency bond. Okay. And if it's convertible, as we understood the concept of convertible, if it's convertible into the equity, so it's a convertible bond. If not, then it will be just vanilla foreign currency bonds. It means you have borrowed money not in INR but in the USD or any other foreign currency. Making sense? Ma'am, can you please explain this concept one more time? Yeah. So if you are borrowing money not from the Indian companies or not from the Indian government but from any other company which is registered outside India,
So what will happen? The currency would change, right? आपको जो लोन मिलेगा वो आपको USD या पाउंड या येन में मिलेगा, but you have to convert that when you have to use that money into the Indian market. So उस पे आपका क्या होगा, आपका फेमा के रूल्स भी लगेंगे RBI के थ्रू, because foreign currency is there and the exchange I mean the foreign currency exchange is being Exchange taken rate, place. yeah. Yeah, so Exchange RBI rate. बीच में आएगा. Yes. Okay. Next you have equity linked debentures. Now just recall the last bond analysis Excel file which we studied in the last session. Okay, there do you remember there was one coupon rate जो मैंने फिक्स कर दिया था, शायद 6% या 8%, बाद में उसको इंक्रीज करके एक बार 12% भी किया था मैंने. Yes, ma'am. Yeah, now now the thing is it was fixed, है ना, कि मैंने वहां पे 12% फिक्स कर दिया था. But let's suppose that coupon rate is now linked to Reliance stock prices return. तो जैसे जैसे रिलायंस के स्टॉक प्राइसेस का रिटर्न फ्लक्चुएट होगा, वैसे वैसे आपका कूपन रेट फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड भी फ्लक्चुएट होगा. सपोज आज के दिन में अगर 8%, सॉरी एक दिन में 8% तो नहीं हो सकता, सपोज इट इज मंथली, है ना, मंथली आपको अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं या क्वार्टरली मिल रहे हैं या सेमी एनुअली मिल रहे हैं, तो सेमी एनुअली जितना रिलायंस का स्टॉक देगा उतना आपका बॉन्ड भी देगा. व्हाई? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू वन इक्विटी. So those type of bonds are known as equity linked bonds or debentures, because government bonds तो होते हैं, I mean government bonds तो stock market से relate करेगी नहीं, that's why it is debenture. So the companies which are issuing debentures where the coupon rate is not fixed but it is linked to any security which is listed on the stock exchange return. Okay, making sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For the similar way, if it is linked to any commodities return, for example gold के returns, silver के returns, steel, crude oil, or any agriculture commodity, for example let's say chana के returns, right? So if it's linked to any commodity, it is known as commodity linked debentures. Hope this point is clear. Okay. Now we have the new topic of mortgage-backed securities and asset-backed securities. मैम मैम Yes, yes, yes. मैम वनीला डिबेंचर्स मैम क्या होता है? Vanilla debentures means plain debentures. जो अपन ने जो स्टेशनरी फिक्स्ड कूपन रेट था उनको वेनिला डिबेंचर्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें कूपन रेट चेंज नहीं हो रहा है. ओके. एंड जब आपका कूपन रेट चेंज होता रहता है तो किससे लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंग उस डिबेंचर का नेम चेंज हो जाता है. द नेमिंग और द नोमेनक्लेचर विल चेंज. या ओके मैम, थैंक यू मैम. ओके. Now, since you know the background of 2008 financial crisis, so your task is to correlate and tell me tomorrow what do you understand by mortgage-backed securities and asset-backed securities and what was their role in financial crisis 2008. Okay? बताएंगे कल मुझे? मैम मुझे थोड़ा आइडिया तो मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ कि कल ही. नहीं नहीं, कल लेट एवरीबडी गो थ्रू इट. ओके, नहीं तो क्या होगा, कल देखेगा ही नहीं कोई, ऐसे ही आ जाओगे आप लोग. Mortgage backed security and asset backed security. ठीक है. Now we will come to the structure of the securities market. So there are basically two markets, primary market and secondary market. When I say the primary market, it means the securities are being launched for the very first time on the exchange platform. Okay, उससे पहले they didn't exist on the stock exchange. They are being listed for the very first time. ऐसा कब होता है? थ्रू IPO, that is the initial public offering के थ्रू होता है. ठीक है. अब IPO में क्या होता है? Okay, did I make you understand the क्या बोलते हैं, कंपनी साइकिल और द कंपनी और बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल अभी नहीं हुआ है. नहीं हुआ ना.
ठीक है, लेट्स डू दैट. आई डोंट नो, आई मीन कोई एक चैप्टर में तो वो आएगा, बट मैं अभी बता देती हूँ सो दैट आपको इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग. अरे वेट. I should have drawn to Excel only. Can't do it. Hope you can see this. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. हाँ, ये जो पहला वाला है that is 1 2 3 4. Okay. So understand you are at point 0. Okay, at the origin. So when you are at point 0, so imagine yourself as Zomato का क्या बोलते हैं? IPO. IPO. नहीं नहीं नहीं. Sole Share. proprietor. क्या? Sole proprietor. अरे जब 2-3 लोग मिलके स्टार्टअप. स्टार्टअप. Partnership. हाँ. Startup. ठीक है. So when you are at 0, so you no when you are at 0, so you just have idea in your head. Okay, कि आपको करना क्या है. Just आपका on papers आपका आइडिया है. ठीक है. Nothing, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, कोई अगर प्रोडक्शन है तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है. Now from 0 to 1, you want money to at least idealize practically the ideas which you have in your head. Okay, so आपको funding चाहिए होती है. So the first stage of funding, when you have idea in your brains and you want to just start up, जिसको हम actually startup बोलते हैं. The first stage of funding, that is the seed funding. Okay, or the angel फंडिंग जिसको हम बोलते हैं. जैसे परी आती है ना. परी हमेशा the fairy brings good omen to us, right? Similarly, the angel funding or the seed funding, just go by their name. पैसा चाहिए in order to just start up your business. Okay, so that is the stage 1. when your idea is good and लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, but it is for example started just in Bangalore and it is not out of Bangalore. If you want to test your project pan India, so first of all आप क्या करोगे, उसके आसपास की cities में जाओगे या big 4 cities में जाओगे and you will check whether this will work or actually not work. So उसके लिए आपको थोड़ा और पैसा चाहिए. So that is the second stage of funding, जिनको हम क्या बोलते हैं? Venture capital. VC. Yes, venture capital funding. Okay. Now in this stage, idea already आपका successful है, but you want to test it कि okay, will it work for the pan India or not, or whether the people will like it. You want to do more testing on your project, right? So अब इसमें क्या होगा? आप और पैसा लाओगे through VC funding. It is a venture capital funding. Now this is the second stage. Now comes the actual growth stage of the company. Okay. अब आपको क्या करना है? अब आपको हर एक इंडिया के हर एक सिटी में आपको अपना प्रोजेक्ट चाहिए. You want to test it on a more higher larger scales.
with increased efficiency, increased features, everything you want to make it perfect, like a perfect going company. तो इस stage में क्या होगा, the company is in the highest growth rate, right? And for that you need large chunk of money, and here comes the role of private equity, that is the PE funding. Okay, so in the third stage of your company, the PE funding would come. And when the PE funding, I mean the people who want to take out their money, when the company is actually ready to get launched on the stock market, that is the stage 4, when the company brings its IPO. अब IPO कब आता है? When the company should be consistently making profit for bare minimum last 3 years. Okay, so at the stage 4 comes the IPO stage, that is getting company itself listed on the stock exchange. Making sense? Is this clear for Ma'am, how? Yeah. वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में डिफरेंस क्या हुआ? वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में ये डिफरेंस हुआ कि जो वेंचर कैपिटल है वो पैसा लगाता है आइडिया के ऊपर. अगर उसको प्रॉफिट कम भी मिल रहा है देन इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर वीसीज. बट प्राइवेट इक्विटी तभी पैसा लगाएगा जब आइडिया इज सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय द मार्केट एंड दे आर हियर जस्ट टू मेक मनी. दे वांट हाई रिटर्न्स. जब उनको हाई प्रॉफिट्स, हाई रिटर्न दिखेंगे, ओनली देन द पीई वुड कम. So VCs are more into putting money into the ideas, but PEs are more into, I mean, they want to put in money more into the profits or the returns. Okay. Yeah. Any other doubt? Ma'am, Yes. ma'am, you said that IPOs are launched when a company gives consistent profit of 3 years minimum. But आप बोलोगे जोमेटो का तो था नहीं. हाँ वही मैम. I know this e-commerce or the new economic countries, companies, no. Even I had to read. आप सेबी का जो उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया है ना, और DHRP, उसमें कुछ मेंशन किया था. I saw it on the Twitter, so we have to read it कि how did the SEBI has allowed them. मैम पेटीएम भी अभी आएगा तो उसकी भी लॉस मेकिंग कंपनी है. So these are the new age startups of India which are getting listed on the stock exchange, right? So इनके लिए कुछ rules की tweaking हुई है जो मैंने भी अभी, because ये recently हुआ है तो I have not even studied, मुझे भी study करना है. Let's do it, right? आप भी study करिए, मैं भी करती हूँ, and then let's discuss कि ऐसा क्या components SEBI ने accept किया है. Okay. Yeah. But the stages are clear to you, right? Yes, sir. So when the company comes for the first time, that is the IPO, that is the primary market. Now understand, कंपनी तो ऑलरेडी आ चुकी है ना. अब जो आप और मैं सपोज बाय करते हैं TCS के शेयर्स या रिलायंस के शेयर्स, नाउ वी आर इनटू द सेकेंडरी मार्केट, कि हमने IPO में पैसा नहीं लगाया है. सपोज मैं अपने TCS के शेयर सेल कर रही हूँ, सामने कोई और पार्टी खरीद रही है ना, मुझे नहीं पता कौन है, या उसको नहीं पता कि मैं बेच रही हूँ. So this is known as secondary market, that is just the exchange of hands. मेरे से आपको जा रहे हैं, आपसे किसी और को जा रहे हैं, that is the secondary market. और जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो and the company wants to borrow one more time or the more money, जिसे हम बोलते हैं OFS, that is the offer for sale. कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है पर कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, वापस से आएगी मार्केट में, बोलेगी कि मैं अपनी और इक्विटी डाइल्यूट कर रही हूँ बट मुझे पैसा दे दो. ठीक है? मेकिंग सेंस? ओके. एनी डाउट फ्रॉम दिस? OFS is primary market or secondary? Which one? OFS. OFS is secondary. Okay. मैम एक डाउट है, मतलब कंपनीज बायबैक कब करती है, मतलब बायबैक का मतलब नीड क्या होता है, मतलब एडवांटेजेस क्या होता है? डोंट वरी, हमारे एक पूरा चैप्टर है कॉर्पोरेट एक्शंस करके, 9 या 10th चैप्टर है, उसमें अपन डिटेल में समझेंगे कि बायबैक कंपनी कब करती है. ठीक है? ओके. ठीक है.
Okay, so I will just remove it, okay, this annotation. Okay, I have one message, let me check. No fresh issue in offer for sale, they sell their holdings. ओके, अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है तो प्रमोटर का तो अपना खुद का पार्ट जा रहा है ना, राइट? सो दैट इज द फ्रॉम द प्रमोटर साइड, बिकॉज सपोज अगर पहले 20% मार्केट के पास है और अगर 80% प्रमोटर के पास है तो 80% तो उनके खुद के पास इक्विटी हुई। प्रमोटर कौन हुआ? कंपनी का ओनर, राइट? नाउ दे आर diluting their share, it means they are diluting their equity in a way. Am I making sense? If not, let me know. Ways to issue in the security market: IPO, follow on public offer. Yes, follow on public offer, the same thing. Now you need to understand, when the government of India, when the government of India does the follow on public offer, it means जो अभी हमने पढ़ा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक सेल करती है उसको OFS बोलते हैं, बट अगर सेम थिंग इज बीइंग डन बाय सम एनी अदर प्राइवेट एंटिटी, उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। सपोज रिलायंस है, रिलायंस दोबारा एक्सचेंज, रिलायंस ऑलरेडी एक्सचेंज पे एग्जिस्ट करता है, बट इफ द रिलायंस आस्क्ड एंड से ओके आई वांट टू बोरो मोर मनी फ्रॉम द पब्लिक, देन रिलायंस के केस में बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। But if this thing is done by the government of India, then it is known as offer for sale. Making sense? Yes, ma'am. Now here comes the private placement. Okay, private placement में क्या होता है? Private placement में, for example, last year Reliance गया था, for example 8% के आसपास Facebook को दिया था, 6% के आसपास जियो के स्टेक में Google को, or on the similar way the Reliance borrowed money from the 6 to 7 different companies, very small shareholding, उनसे यानी कि उनसे borrow किया था money. It means the Reliance went out and borrowed money from very selected people. That is the private placement. उसने पूरे public को, I mean people like you and me को नहीं बोला कि I want to borrow money from you. If the company borrows money from the selected group of people, that is known as the private placement. Making sense? Yes, ma'am. Now tell me, last year Excuse me, ma'am. yeah, tell me. मैम अगर प्राइवेट कंपनीज अगर किसी पीई के पास या वीसी के पास जाए तो वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट का कट होगा? Sorry? हेलो। Yes, yes. मैम लाइक अगर प्राइवेट कंपनी किसी पीई के पास जाए, लाइक प्राइवेट इक्विटीज या वेंचर कैपिटल के पास, तो फिर वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट होगा? हाँ, see, आप VC और PE को टर्मिनोलॉजी, वंस द कंपनी इज ऑन एक्सचेंज, सपोज अब रिलायंस अगर जा रहा है टाइगर ग्लोबल से पैसे लेने या किसी और से, तो वो नहीं पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट्स। जो PE है वो PE में ही पैसा लगाएंगे, जो VC है वो VC में ही, VC स्टेज में ही पैसा लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि वंस अ कंपनी इज लिस्टेड एंड मैच्योर्ड स्टेज, फिर भी अगर उनको पैसा चाहिए तो वो VC के पास जाएंगे। नहीं, VC का काम ही नहीं है इन कंपनीज को पैसा देना। ओके, ओके। मुझे बताओ रिलायंस ने लास्ट ईयर किन किन कंपनी से बोरो मनी किया था विद देयर परसेंटेजेस? टेक 2 minutes एंड टेल मी। मैम एक बार अगेन रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही थी। I'm asking you to find out from what all companies Reliance borrowed money last year with their percentages. Okay.
I think I got it. Okay. So should I say No, no, now? no, 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 no. Send me in the chat box. Let others also find it out. Hello. Yes. Ma'am, Rajnikant this side. Sorry, आज मेरा internet is not working properly, so I'm not aware कि अभी आपने क्या task दिया है. मैंने आपको क्या टास्क दिया है? पिछले साल I mean रिलायंस अभी कोई ने कौन कौन से डील्स की हैं किन किन कंपनीज के साथ एंड देयर रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस. okay. हाँ मिल गया. ओके, सेंड मी. मैम रिलायंस ने जो अपना शेयर्स बेचे हैं वो वाले डील्स की जो रिलायंस ने खरीदे हैं वो भी. ऑल द डील्स. बायबैक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट द अदर डील जैसे फेसबुक के साथ हुई थी, गूगल के साथ हुई थी. ठीक है. So all these were the types of private placement. फेसबुक सबसे हाईएस्ट है, राइट? फेसबुक के बाद KKR 2.23 32 सॉरी सर्वर नहीं. ओके, ठीक है. नाउ कम्स द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. आप में से किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया है कभी? Yes, ma'am. तो जब आपने अपना स्टेटस चेक किया होगा तब उसने बताया होगा कि रिटेल्स पीपल ने x आई मीन सपोज 10x, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने सपोज 3x, एम्प्लॉय ने 2x. ऐसा कर कुछ आपने कभी स्टैटिस्टिक्स ma'am. देखा है आईपीओ में? Yes, ma'am. Yeah. So qualified institutional placements mainly by the institutions. For example, if Reliance is investing in any other corporate, right? Or if the Axis Bank is investing in Reliance. So अगर एक institution invests in other institution, then it's a type of institutional placement. Okay. तो फिर डिफरेंस क्या आ रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में? क्या होगा बताओ? बताओ बताओ. प्राइवेट में अब जैसे KKR है, इस KKR लिस्टेड?
नो मैम। है ना? अच्छा मतलब कोई और वहाँ है? पे हाँ, वहां पे जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड हो, एंड क्वालिफाइड में इट हैज टू बी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एंटिटी। ठीक है। यस मैम। प्रेफरेंशियल इशू, गाइस जब हमने नॉर्मल इक्विटी, डीवीआर, सब प्रेफरेंशियल शेयर्स भी डिस्कस किए थे, यू रिमेम्बर, और डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट मोर? लास्ट सेशन में हमने किया था इक्विटी, डीवीआर, नहीं किया था? किया था मैम। है ना? ठीक है। Next we have rights and the bonus issue. I am not taking abhi because we have a complete chapter on this, क्या बोलते हैं, corporate actions, है ना? उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी what are right issues, what are bonus issues. Just bear it with me for 2 or 3 more sessions. उसके बाद वो टॉपिक हमारा आ जाएगा। ऑनशोर ऑफरिंग और ऑफशोर ऑफरिंग। ऑनशोर ऑफरिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है ना? टीसीएस इंडिया की कंपनी है। सो द कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, अगर वहीं पे उसकी वर्किंग है, दैट इज द ऑन शोर। बट फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है? अगर माइक्रोसॉफ्ट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी और अगर वो इंडिया में भी होती, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में होती तो उसका आईडीआर होता, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? ऑफशोर। इट मीन्स other than the country where it is or it has been registered. Any country, if the offer has been made other than the country in which the company has been registered, it is known as offshore, and if it's in the same country, it is known as offshore. अब जोमेटो इंडियन कंपनी है, इंडिया के ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, दैट इज द ऑन शोर ऑफरिंग। अगर जोमेटो जाके यूएस में होती है लिस्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफ शोर ऑफरिंग। ठीक है। हम जो कंपनी अगर दोनों जगह लिस्टेड है, हो कोई सकती है, कंपनी, तो उसकी उसे क्या ऑन शोर बोलेंगे? एज वेल एज ऑफ शोर दोनों जगह लिस्टेड है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। ऑफर फॉर सेल तो देखा ही है। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में द फर्स्ट वन इज द, यस हेलो यस मैम, यस टेल मी। कि अगर किसी पब्लिक कंपनी को लाइक फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना है, तो फिर वो वहां पे लिस्ट भी हो सकती है, तो फिर वो एडीआर या जीडीआर को क्यों चूज करेगी? लिस्ट तो हो रही है, एडीआर क्या होता है? व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड लास्ट टाइम? एडीआर क्या होता है? मैम रिसीट होती है ना, हम पहले लाइक तो वो डोमेस्टिक रिसीट कैसे डिपॉजिटरी में होती जाते है? हैं। जब वो लिस्ट होती है कंपनी, लिस्ट नहीं होगी तो आपको रिसीट कैसे मिलेगी? आपने बोला कि एडीआर की क्या जरूरत है ना? बट जब कंपनी लिस्ट होगी तभी तो उसका एडीआर बनेगा ना। लिस्ट ही नहीं होगी तो एडीआर कैसे होगा? कोई इंडियन कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट में जाती है और लिस्ट होती है, तभी तो उसका एडीआर बन के आएगा। तो लिस्ट तो होना पड़ेगा ना, लिस्टिंग इज नेसेसरी, तभी तो उसका ऑफशोर होगा। ऑफशोर ऑफरिंग इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल जोमेटो जाके यूएस स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है, तो उसको ऑफशोर ऑफरिंग बोलेंगे, और उसके वहां पे नॉर्मल स्टॉक्स नहीं होंगे, एडीआर होंगे। मैम मेकिंग फिर तो सेंस? लाइक वो वहां पे लिस्ट हो रही है, तो फिर वो ऐसे शेयर्स क्यों नहीं दे रही, एडीआर क्यों दे रही है? सी, अब आपका 1 INR इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 USD, नो? यस मैम। आपका एक्सचेंज रेट है, आपकी फाइलिंग पैटर्न्स हैं, आपका रेगुलेटर सेबी है, उनका रेगुलेटर एसईसी है, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो बीच में है। दैट्स व्हाई 1 शेयर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द 1 शेयर ऑफ यूएस। ओके। ठीक है। ओके। अब जैसे हमारे पास स्टॉक्स हैं, है ना, वैसे ही एक डेरिवेटिव्स में होते हैं फ्यूचर्स, जो आपने सुना होगा। डू यू नो फ्यूचर्स? यस मैम।
Yes, ma'am. So the futures are being traded on the exchange, but फ्यूचर्स अगर ट्रेड नहीं हो रहे होते और अगर वो फिजिकल मार्केट में अगर आप सेम प्रोसेस कर रहे होते, देन इट इज नोन एज ओटीसी, दैट इज द ओवर द काउंटर. इट मींस दो सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. ऑल्सो फ्यूचर्स में लॉट्स फिक्स्ड होते हैं, है ना, कि 5 लॉट्स 10 लॉट्स, कितनी क्वांटिटी होगी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. और ओटीसी में आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हो. इफ यू आर अ बायर एंड आई एम अ सेलर एंड अपन दोनों को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन वी कैन डू एज पर अवर ओन नीड. इट इज टेलर मेड. ओके, बट फ्यूचर्स आर नॉट. फ्यूचर्स आर फिक्स्ड. आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग करनी पड़ती है, राइट. एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, यू नो, जो एक्सचेंज पे ट्रेड मैम होते जैसे हैं. बैंक निफ्टी और इनमें ये लोग जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स ही हुआ ना? हाँ हाँ, वो फ्यूचर्स है. यस, ठीक है. ट्रेडिंग you all know. Now you tell me, what is the difference between clearing and settlement? मैम क्लियरिंग में जैसे क्या होता है कि मतलब अगर कोई दो पार्टीज होती है, मतलब जैसे किसी एक को पे करना है दूसरे को रिसीव करना है, तो वो जो एक्सचेंज होता है वो सॉर्ट ऑफ नेट कर देता है दोनों को, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है. तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो भी नेट पे ऑफ होता है, जो भी फाइनल पे ऑफ होता है कि मतलब इफ ए इज पेइंग 50 एंड बी हैज टू पे 70 टू ए, सो मतलब उसमें क्या होगा कि वो जो 20 रुपीज है बी डायरेक्टली सिर्फ ए को 20 रुपीज देगा, तो वो नेट ऑफ हो जाता है. सो अल्टीमेटली वो लाइक जो नेट पे ऑफ होता है वो क्लियरिंग होता है. एंड सेटलमेंट जब होता है जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है. Okay. मैम Yes. क्लियरिंग क्लियरिंग एक मींस लाइक एक पर्सन एक हाउस होती है इसमें कि दो क्या दो होती है एग्रीमेंट को पर्सनल? मींस एक क्लियरिंग हाउस लाइक में सेंसेक्स और निफ्टी हो गई, इसमें दो डील जो हो रही है उसके बीच में हम दो लोगों को है ना मींस एग्रीमेंट कराया जाता है. लाइक जैसे अगर मुझे कोई भी शेयर खरीदना होता है तो मैं डायरेक्ट नहीं खरीद सकता हूँ, एक ट्रेडिंग हाउस से खरीदना पड़ता है. Yes, लाइक मैं yes. निफ्टी से खरीद सकता हूँ. और सेटलमेंट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि मैं डायरेक्ट किसी एक आदमी मतलब फेस टू फेस एग्रीमेंट होती है. Yes. सेटलमेंट में लाइक दिस. So partially you both are right. Okay. So clearing is nothing but, ऐसे समझते हैं, सपोज आपको रिलायंस के 5 शेयर्स बेचने हैं और मुझे रिलायंस के 5 शेयर्स खरीदने हैं. तो मैंने बाय ऑर्डर डाला है एंड आपने सेल ऑर्डर डाला है, ठीक है. अब आपने भी ऑर्डर पंच इन कर दिया, मैंने भी ऑर्डर पंच इन कर दिया. अब मुझे मुझे बाय करना था कि मुझे सेल करना था? बाय करना था. मुझे बाय करना था. ओके. अगर मुझे बाय करना है तो सेबी, देखिए, आई मीन नॉट एग्जैक्टली द रेगुलेटर, बट सम एंटिटी नीड्स टू सी ना कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं है. मैं ऐसे तो मुझे दे नहीं सकता वो शेयर्स. एंड अगर आपको सेल करना है तो उसको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल में शेयर्स हैं कि नहीं है. कि आप कैसे सेल कर दोगे अगर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर बाद में पता चला आपके पास शेयर्स ही नहीं है तो, राइट. सो द एंटिटी विच नीड्स टू सेल, उसका ये चेक होता है कि उसके पास शेयर्स हैं कि नहीं है. द एंटिटी विच नीड्स टू बाय, उनके पास ये चेक होगा कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है. वंस दिस इज बीइंग कंफर्म्ड, ओके, तो दिस वाज द क्लियरिंग प्रोसेस. कि आपका मैच होना चाहिए, नॉट मैच ओनली इन टर्म्स ऑफ बिड्स, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज बिड्स. कि अगर आपको 5 बेचने हैं तो मुझे 5 मिलेंगे और किस रेट पे मिलेंगे, तो उसके लिए पैसा भी वेरीफाई होता है, ठीक है. and the settlement is actual transfer of securities. एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपके अकाउंट से शेयर्स निकल जाएंगे, दैट इज द फाइनल सेटलमेंट. सो इंडिया में T+2 होता है. इट मीन्स द फाइनल सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन द T+2. T इज व्हाट? दैट इज द ट्रेडिंग डे. सपोज अगर आपने आज अगर ट्रेड किया है, दैट इज द T. टुमारो विल बी द T+1.
and day after tomorrow will be the T+2. तो फाइनल सेटलमेंट इंडिया में कब तक होता है? in T+2. ठीक है? Is this clear now? So ma'am, clearing is done through the CDSL and NSDL. Yes. And the clearing and the settlement is done with SEBI. Yeah, not SEBI but the exchange. Exchange. Yeah, okay. Got it. ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट गाइस, आपके पास पूरी एक मॉड्यूल है इक्विटी डेरिवेटिव्स की. क्लियरिंग एक बार फिर से बता दो ना. क्लियरिंग इज मैचिंग ऑफ योर ऑर्डर्स, राइट, एंड सेटलमेंट इज फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ दोज ऑर्डर्स. शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है गाइस? वैल्यू एट रिस्क, एमटीएम, ये सब आपका नेक्स्ट मॉड्यूल में पूरी मॉड्यूल है इसके ऊपर. ठीक है? so at that time Siddhant will take. Next we have the market intermediaries. Stock exchanges आपको पता ही है. Then we have the depositories. Okay, depositories क्या होती हैं? जैसे अभी किसी ने नाम लिया था CDSL and NSDL. So clearing करते हैं जब उनके पास शेयर्स आते हैं, तो शेयर्स कहाँ रखते हैं? फिजिकल शेयर्स तो है नहीं. So they are into your account और my account. तो इन सबका पापा कौन है? एक होता है ना मेन लॉकर, देन सब लॉकर्स टाइप. तो ये सब होता है. अगर BSE का है तो CDSL, और अगर NSE का है तो NSDL के पास. So these are the depositories. Okay, and depository participant क्या करता है? So depository participant is the one through which the actual transaction takes place. अब ये कोई पर्सन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, बिकॉज अगर आप भी अपना बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर डाल रहे हो तो आपको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें से पैसे जा रहे हैं. आपको एक डीमेट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स आ रहे हैं, राइट? सो दैट इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मेकिंग सेंस? यस मैम. मैम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फिर से बता दीजिए. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मीन्स बैंक हो गया, आपका डीमेट अकाउंट हो गया. जैसे कि अगर आपका आनंद राठी के पास है तो ब्रोकर हो गया आपका, है ना? सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स थ्रू व्हिच एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपके पैसे कहाँ कटेंगे? बिकॉज अगर आपको खरीदना है तो बैंक अकाउंट होगा, उसी में तो ये चेक करेगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, राइट? सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई इंसान नहीं है. यहाँ पे आप पढ़ोगे तो दे हैव यूज्ड द वर्ड एजेंट. So don't get misleaded by it's a person. No, it's a financial institution who facilitates you in the process. Okay? Yes ma'am. Okay. Trading members, stock brokers and sub brokers. Brokers, you know, grow up stocks, right? Then Zerodha, बहुत सारे. These all are the brokers. पहले क्या होता था? फिजिकली जब ट्रेडिंग होती थी ना तो एक बड़ा ब्रोकर होता था, उसके चेले चपाटे होते थे, उनको सब ब्रोकर्स बोलते थे, राइट? तो उस जमाने में ये सब ब्रोकर वर्ड यूज होता था. आजकल तो सी एवरीबडी ट्रेड्स इट थ्रू ऑनलाइन, राइट? सो नाउ देयर इज अ डायरेक्ट थिंग. ब्रोकर्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड दूसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसमें वो लोग आपको फ्री के एडवाइसेस भी देते हैं कि इसमें पैसा डालना चाहिए, इसमें नहीं डालना चाहिए, है ना? वो अपने रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे. डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड एक और ब्रोकर्स होते हैं, डायरेक्ट नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड फुल फ्लैश सर्विस ब्रोकर. हाँ, यस, गुड. ठीक है. ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है गाइस? ऑथराइज्ड पर्सन, सी अगर आप कहीं पे फंसे हो, है ना, तो आपको कौन हेल्प करेगा किसी चीज में? तो ये ब्रोकर की तरफ से होता है. तो आई वुड जस्ट रीड इट, बहुत ही सिंपल है. ऑथराइज्ड पर्सन इज एनी पर्सन. अब आपको याद होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पर्सन की डेफिनेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एंटिटी आती है, राइट? एनी लिस्टेड एंटिटी, बहुत सारी उसमें है. LLP, body corporate, who is appointed by the stockbroker or trading member as an agent to reach out to the investors scattered across the country. जो बिजनेस डेवलपमेंट टाइप पीपल नहीं होते जो आपकी क्वेरी भी सॉल्व करते हैं,
या अगर आपको कुछ ऑर्डर करने में दिक्कत आ गई, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन दे विल सॉल्व योर क्वेरीज आल्सो। उस टाइप से होता है ऑथराइज पर्सन। बट नाउ सिंस डायरेक्ट आप ऑनलाइन करने लगे हो, तो इन सब की अहमियत आज के जमाने में काफी घट गई है। ठीक है, नाउ कम्स द कस्टोडियंस। कस्टोडियंस कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल शेयर्स के लिए आपके पास डिपॉजिटरीज थी, द स्टोर हाउस ऑफ द डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स। Similarly, the storehouse for the commodities, for example, gold, silver, those are known as the custodians. Banks are the biggest custodians of gold. इतना सबका लॉकर क्या है? लॉकर इज नथिंग बट आपके बैंक में होता है, सो दैट इज अ बैंक इज अ कस्टोडियन जो आपकी कमोडिटीज को रखता है। मेकिंग सेंस? यस और Yes, नो? ma'am. या नाउ कम्स द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब आप मुझे बताओगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी। गो थ्रू इट, रीड इट एंड टेल मी। हमारी CCPs होते हैं ना, सेंट्रल काउंटर क्लियरिंग पार्टी, सेंट्रल काउंटर पार्टी। यस, हाँ so तो what वो is the function of these entities? CCPs like they check both the parties की, like if the proof is right or not, मतलब अगर दोनों का सही रहता है then ही वो trade execute होता है। So whoever selling he has to post a margin, so it's like a central counterparty। So जैसे exchange का काम होता है, जैसे futures का काम होता है कि दो पार्टी को like मिलवाना, वैसे ही सेंट्रल CCP का भी वही रोल है। यस, तो जो अभी हमने क्लियरिंग प्रोसेस समझा ना, अब वही वो कैसे होगा क्लियरिंग? अब मैंने आपको बोला कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, आपके डीमैट से जाएंगे, ठीक है? तो वो अब जो बैंक अकाउंट वाले जो ट्रांजैक्शन है वो कौन करेगा? सपोज मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में हो तो एक्सिस बैंक वाला ही करेगा ना। तो एक्सिस बैंक इज नथिंग बट वन ऑफ द, आई मीन, कुड बी अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जनरली बैंक्स ही होते हैं, or could be any financial intermediary, but generally banks होते हैं। Why to put in, more financial intermediaries into the process? And clearing banks are the, see, you need to understand clearing corporation and clearing banks का रोल जो है ना वो एक साथ है, राइट? क्लियरिंग बैंक्स जो उस प्रोसेस को क्लियर करते हैं, एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो इंश्योर करता है कि जो क्लियरिंग बैंक कर रहा है वो हमारे सुपरविजन में हो रहा है एंड प्रोसेस एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? सो मेजर डिफरेंस इज ओनली वन कि एक्चुअल फिजिकल एंटिटी जिसके थ्रू ये हो रहा है दोज आर द बैंक। बट फॉर एग्जाम्पल सेबी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। सेबी इज जस्ट अ रेगुलेटर। सेबी इज रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट। सिमिलरली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ensures कि your transaction happens and protects the interest of the investor, I would say। ठीक है, मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं गाइस? कुछ तो बताइए आप, कुछ आपने भी पढ़ा होगा लाइफ में। कौन होते हैं बताइए? नो आइडिया? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर? Yes, ma'am. क्या करते हैं वो? And they are actually buy or sell the securities in मैम जब हम एक न्यू इश्यू वगैरह लाते हैं तब हमें से लिस्ट करने के लिए, उसका वैल्यूएशन वगैरह निकालने के लिए कंपनी का, के लिए हमें मर्चेंट बैंकर्स यूज करते हैं। So They basically merchant help bank, through the process of IPO, ma'am. yes, yes, yes,
मर्चेंट बैंकर्स अंडरप्राइज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यूएस में बोलते हैं and this is a European terminology. So once you understand the role of investment bankers, it's the same. and they take a responsibility of undertaking IPO if Yes, the yes. उनको हम see underwriting and the underwriting. underwriters जो भी next topic है, they are also the merchant bankers only, right? So it Yes, is ma'am. like one of the tasks the investment bankers do along with valuation, modeling, and many more other tasks which they have. Ma'am, they also do a documentation for Yes, listing an IPO. yes, yes, yes. When you see जब IPO का न्यूज़पेपर में जब एडवर्टीजमेंट आता है उसके नीचे लिखा हुआ होता है एसोसिएटेड मर्चेंट बैंकर्स, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, ये जो भी हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होते हैं. Yes, ma'am. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स में गाइस, दिस इज योर टास्क. Okay, you have to tell me what are the P notes. Take it down as a task. Foreign portfolio invest. So you have FDI, FPI. You need to tell me tomorrow what is the difference between FPI and FDI. And one more FII, foreign institutional investor, जो यहाँ पे थे. ठीक है. P notes, FDI, FPI, FII. जॉट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. Okay. Mutual funds, guys, we have discussed. इंश्योरेंस कंपनीज यू नो, पेंशन पता है. अच्छा देखो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स. नाउ यू अंडरस्टैंड? या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कम्स द हेज फंड्स. सो हेज फंड्स, ओके, किसी ने कभी सुना है हेज फंड? Yes, ma'am. Ma'am, it's basically Yes, ma'am. Amir Log ka mutual fund. करेक्ट, ma'am. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. So this is actually a misnomer, guys. वो हेज नहीं करता है आपका पोर्टफोलियो, इनफैक्ट मोर रिस्की एसेट्स में वो जाके रख देता है. मैम पहले ये लोग हेज करते थे ना, अब नहीं करते हैं. नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं करते थे. वो भाई डेरिवेटिव्स में डालते हैं पैसा, हाई रिस्क की स्ट्रेटेजीज में. देयर एजेंडा इज टू मेक मनी. केवल नाम ही है इनका हेज. यस यस, इट्स मिसनॉमर. ठीक है. सो जो भी अमीर लोग होते हैं, एचएनआई जिनको अपन बोलते हैं, वो लोग जब डेरिवेटिव्स में पैसा डालते हैं एंड दे टेक हाई रिस्क इन ऑर्डर टू गेन हाई रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज. What are derivatives? What are strategies? You have your complete next module, okay? So don't worry. Those who don't understand derivatives, you will get to know in your second module. Then you have alternate investment funds. Tell me, क्या होते हैं alternate investment funds? Search about it. Take 2 minutes and explain it to me. Ma'am, I know alternate I like funds other expenses. than cash, stocks and bonds जो भी होते हैं वो सब alternate investments हैं. क्या क्या? Ma'am, invest in other asset classes. Like? Painting, Real estate. Commodity, painting, foreign yeah, One commodity. by one. अगर आप And सब बोलोगे तो मुझे किसी का भी नहीं सुनाई देगा. real estate. Antique products. Yes, antique, real estate. Commodity. Okay. painting, क्या? paintings, expensive wine. Private equity. गूगल बोल रहा है ना ये? No, ma'am. मैं बोल रहा हूँ. नहीं नहीं, गूगल की लैंग्वेज है. हाँ, एंटीक्स में. यस. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन सिक्योरिटीज अदर देन बॉन्ड्स, शेयर्स, कमोडिटीज भी गाइस नॉर्मल में ही आती है ना? बिकॉज सी इट डिपेंड. पहले के जमाने में क्या होता था ना, कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत कम होती थी तो उसको ऑल्टरनेट में रखते थे. अभी कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होने लगी है. सो now you can consider it under the normal securities, not the alternate investment funds.
एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के एग्जांपल्स होंगे जैसे कि रियल एस्टेट का रीट है ना, एंड इन वीट देयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. So okay, you tell me how many REITs and InvITs are there, and what do you understand by REITs and InvITs? And there are basically two REITs in India Mm-hmm. that are listed on this, I think, on कौन stock से? market. So they basically are kind of a mutual fund, but that they pool the money and invest in the real estate sector, and they Yes. get their dividend as rent from the properties that they have bought. Yes. Good. And मैम 3 InvITs है ना? में I don't know. I have asked you to find out. गूगल पे 3 दिखा रहा है. Let everybody search. Confirm हो जाएगा अभी. And what are InvITs? REITs brother. Sorry. InvIT are the investment trust. हाँ, REITs भी वही है. But what's the difference? मैम वो लैंड में करते हैं, मतलब रियल एस्टेट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में. So it's like a subset. Okay, REITs are the subset of InvITs. Infrastructure project could be a dam manufacturing or The a road, highway project, railways. railway project, shipyard. Okay, and REITs are only for the real estate projects. Okay, so REITs Yes, are a yes. subset of InvITs. मैम बताओ इनविट की कितने स्पेलिंग REITs क्या हैं? है? INVITS. And there are 3 REITs. I checked, ma'am. कौन कौन से? Embassy Office Parks, Mindspace Business Park, and just a minute, ma'am. कौन सा बिल्ला? ब्रुकफील्ड. अरे मैम 3 है, एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स एंड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट. Okay. So is everybody confirming me currently 3 InvITs are there? And how many REITs? 3. वो कौन से हैं? वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, Mindspace. माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स एंड ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट. ये तो अभी आपने कहा InvITs है ना? नहीं, ये रीट्स हैं, रीट्स. ये REITs हैं. ओके, तो InvITs हाँ. कौन कितने हैं? एक मिनट. कौन सी वेबसाइट से बता रहे हो? एक मिनट. ईटी मनी. ओके. चेक इट ऑन क्या नाम है इसका? इनवीट्स 15 है. ओके. एक किसी सिटी के नाम से, राजस्थान सिटी के नाम से वेबसाइट है, मुझे याद नहीं आ रही है. एनीबॉडी रिमेम्बर? मैम ये गलत बता रहा है क्या? तो उस पर क्यों देखें फिर? नहीं, ईटी मनी आई एम नॉट सेइंग वो गलत सोर्स है. मैं बस याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है. 15 आप बता रहे हो InvITs. ये आपने यस मैम. कहाँ से कंफर्म किया? ये भी ईटी मनी से? हाँ हाँ हाँ, ईटी मनी से. ओके. एवरीबॉडी एल्स? मैम आप कहाँ से हो? हाउ डज इट मैटर? इंडिया से ऐसे हूँ, मुझे इतना पता है. बैंगलोर कहा था आपने अभी. कंफर्म एवरीबॉडी? Yes, ma'am. 15 InvITs 15? are there. I'm in SEBI's website, it's showing 15. गुड. तो वहां पे REITs कितने हैं? कंफर्म दैट आल्सो कि सही है कि नहीं. 15 now?
15 InvITs and REITs. I'm in weeks. I am. I'm asking you to confirm for REITs also कि Yeah, whether SEBI is also. REITs मैम 3 ही है मैम. I checked on Okay. SEBI as well. ठीक है, perfect. ठीक है. Investment advisors are those who give you investment advices. For example, whether you should be buying a particular stock or not, whether you should be selling it or not, or whether you should buy at what price, what should you currently do with that stock, okay? Or any other security, be it the commodity or any other asset class. And there are two types of investment advisors. One who gives advices to the corporates or the companies, and the second one who give advices to the retail participants like you and me. ओके तो दोनों के अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं. मैम जो कॉर्पोरेट कंपनी को एडवाइस देते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही होते हैं. यस इन्वेस्टमेंट बैंकर. एंड सपोज आप जाओगे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो आप उसे क्या बोलोगे? फाइनेंशियल प्लानर बोलोगे, है ना? एंड फाइनेंशियल प्लान आपको बताएगा कितना पैसा कहाँ पे लगाना है. बट सपोज उसने बोल दिया कि आपको 1 लाख रुपए 1 साल का स्टॉक मार्केट पे लगाना है. नाउ स्टॉक मार्केट में किस सिक्योरिटी पे लगाना है वो आपको कॉल कौन देगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देगा. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. So don't confuse between the investment advisor and financial planner. दोनों का different role है. रिटेल पार्टिसिपेंट्स आप जानते हो, यू एंड मी, है ना? वेरी सिंपल. ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग. आज हमने यहाँ तक स्टडी किया है, ठीक है? सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद 2.5 दैट इज द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन. प्लीज एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिएगा आज जहाँ तक हमने आज कवर किया है. सेकेंड, कंप्लीट योर टास्क एंड प्लीज रीड एनुअल रिपोर्ट. ठीक है? यस मैम. Any doubt from the today's session? Yes, Chittorgarh. Very good, Piyush. Yes. Yeah. Any doubt? Anybody? Please tell me. No, ma'am. No? Then shall we close the session? मैम दो ही होमवर्क है ना, एक 2.2.7.7 एक है उसको गो थ्रू करना है और एक एफपीआई एफडीआई और एफआईआई को करना है. I don't remember. मैंने आपको day 1 पे बोल दिया था. मैं टास्क दे देती हूँ, then I don't remember. It's your responsibility to jot it down then and there. हाँ Yes, there लिखा are two. है, बस MBS कंफर्म and कर रहे हैं. ABS in 2008 crisis, FDI, FP and FII. अच्छा ठीक है. ठीक है. Tomorrow we will meet at the same. अच्छा, is it possible to have session tomorrow in the morning if you all are comfortable? Morning what? No? after 12 Comfortable. No ma'am. More Early comfortable now. morning? Afternoon. Ma'am, we have a classes from 9 to 6. So संडे को भी? हाँ, yes ma'am. कौन सी क्लासेस है? No ma'am, I'm doing MBA, no? So we have a classes on 7 day. कहाँ से कर रहे हो आप? बालाजी मैम, श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, पुणे. इतनी तो पढ़ाई होती नहीं है वहाँ की, संडे को No ये लोग ma'am, but क्लासेस they रखते are हैं. हाँ वो पढ़ाते हैं, but क्या बोले. अरे मैम कल और काम भी रहेगा, कपड़े वपड़े धुलने रहेंगे. मैम if possible नहीं, 7 बजे से तो नहीं हो पाएगा. शाम को ही रखो. I might have to go somewhere, so I was just wondering if we can have session early morning अगर हो जाता तो, so that you are also free. I will also be free. ठीक है, let me see. ठीक है, जैसा भी होता है I will inform you. Okay. Okay ma'am. Okay, thank you. Thank you Bye. ma'am. Have a nice.